first of all, I'm thankful to Dr. Shefali Nagpal, the director of UGC-HRD Kanpur Kalan, and course coordinator Dr. Bhupender, my friend, for giving me chance to interact all of you, because we all are teachers and we all belong to teaching fraternity. And some of you are very senior to me. I can see Dr. Kalpana madam and others. So just it is a sharing of knowledge with all of you, not the teaching one, that we have a common platform. So may I request the applicants that please they can just turn off their mics, because the mics is creating the disturbance. And in the meantime, I will also close the camera so that the connectivity will be uniform. I was informed by Dr. Bhupender that because we have very hectic session by Dr. Devendra Mohan in the morning, so I will try to be simple. I will try to be finish on time. So let me start. Yes, Hadif sir, you can proceed. We will discuss other thing in the question answer session or in the last of session. So you can proceed. अपनी वीडियो बंद कर रखी। So is it visible to all of you? Yes, 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 sir. Okay. Yes, So sir. the Yes, sir. topic is, I'm going to start the topic, and it is on solid waste management issues and challenges. The first of all, what is the meaning of the waste? Because it is a very basic topic. Daily we came across, all of us have some idea about it. So the point is that any substance or object which the holder discard or intend to discard, जो चीज हम लोग को यूज में नहीं है, इट बिकम ए वेस्ट मैनी टाइम. चाहे वो आपका एम्प्टी रिफिल हो, चाहे पानी की बॉटल हो, चाहे वो दूध का कंटेनर हो, whatever be the thing. So daily we are just discarding many items and then they become the waste. So there are many definitions by different organizations. So as the United Nations Environment Program, so all solid waste which a city authority accept, and they have the responsibility of managing in some way. And there are different facts. दांगी सर म्यूट करें आप अपने आप को. दांगी सर विवेक सर म्यूट करें आप. हाँ चलिए सर. So there are certain facts that about 8 million tons of plastic is entered into the world oceans, and due to which many seabirds and different animals killed every year. And this is an old data, but it is also amazing that up to 2005, the pen which everybody is holding now and is having, that 100 billion pens are sold up to 2005. And if we arrange all this disposed pen, it can circle our globe 348 times. And then another thing is that the plastic containers, plates and cup, which we are just using once, they will consume our 10% of world oil supply that is just used to making them or for their production. And then we are throwing so much of bottles and cans every year that if we collect all of them, we can go to moon and come back 20 times. So this is the scenario that how the problem is aggravating day by day. Then come to the classification of waste. Depending on the form, it will be
solid, liquid or gas, slurry. Then from where it is coming? It is domestic, commercial, industrial, agriculture, clinical, institutional. Universities and colleges are coming in the institution category. Our houses are coming in the domestic category. Malls, shoppings are coming in the commercial category. What is the property of the waste exhibit? It may be toxic, it may be reactive, it may be acidic, it may be alkaline, it may be inert. The one thing, this inert property means that whenever we discard a waste, so the waste which will not undergo much change, the waste which will not undergo much biodegradation, it will not produce leachate, that comes under inert category. Meaning is that कि आप उसे डाल दीजिए ओपन डंपिंग में भी तो वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और वो एज इट इज ही शायद 5-10 साल तक भी पड़ा रहेगा. और उसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट and the mining waste, they are coming under the category of inert waste. Legal aspects, what are the rules of that country says about that waste? That is the legal aspect we will discuss in the later class, in the later lecture just now. Then composition, what the waste is composed of. आप अपने घरों का जो एक बार कूड़ा है डस्टबिन है उस पे नजर डालेंगे तो you will find out कि 40% will be the food waste, 5% will be the glass or ceramics, 3% metal, inert, plastics are there, textile is there, paper is there, and if you see 40% is organic, 37% is combustible, 8% is recyclable, and 15 is inert waste. This is the bar graph of the same data. Then this is the approximate time to degenerate this waste, that if we dump them, if we dispose them, then how much time they will take. Usually depending on the form of the waste, the composition of the properties, it may depend upon 1 week or 2 for the organic waste, and it will be 100 years, 500 years for the metals, and then for the bottles it will be undetermined. Then what are our traditional beliefs? हम क्यों नहीं इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से डील नहीं कर पा रहे? हम अपने घरों में भी जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? जो हमारा बिलीफ है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट वी ऑल आर फॉलोइंग दैट, बट मोर और लेस आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. कि भाई मेरे घर से कूड़ा निकल गया तो मेरा काम खत्म है, चाहे मैंने खाली प्लॉट में डंप किया, चाहे मैंने किसी की कहीं झाड़ियों में डाला, कहीं भी डाला, but from my side it is away. Then the second philosophy or the traditional belief is that not in my backyard, कि भाई मेरे घर के पीछे मत डाल, बाकी कहीं डाल दे, that is the other thing. And the third point is that flame, flush और fling, या तो flame जला दीजिए या flush कर दीजिए या फेंक दीजिए. So ये तीनों चीजें जो है, they will make this waste a unsustainable society, or you can say they will cause hinders in the sustainability of the waste. आप इसके विपरीत जाएंगे. विवेक दांगी जी जो है वो हिस्ट्री के हैं, एंड आई रिमेम्बर उन्होंने बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट राखी गढ़ी पे लास्ट टाइम लेक्चर्स दिया था. आई अटेंड दैट वन. सो उसी को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ कि जो हमारा मोहनजोदाड़ो सिटी है, 2000 ईयर BC में भी दे practice the solid waste management. So we can learn from the ancestors, we can learn from the history, and then we can adopt it. So now come to the management. What is the waste management? सबसे लास्ट में आप देखिए कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट को ऐसे करना है कि जो हमारी बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, ज्यादा खर्चा भी ना हो, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एस्थेटिक्स देखने में अच्छा लगे, और जो भी दूसरी एनवायरमेंट की कंसिडरेशन है उन सब को लेके हमने वेस्ट मैनेजमेंट करना है. एंड व्हाट आर द 6 एलिमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ वेस्ट, चाहे वो लिक्विड, सॉलिड, हैजार्डस, बायोमेडिकल, कंस्ट्रक्शन, कोई भी वेस्ट हो, जो एलिमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है दे विल बी सेम स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरेशन. Then it is handling, storage at the source, collection,
separation, processing, transfer and transport, and disposal. Depending on the economics, depending upon कि आपने किस लेवल तक वेस्ट मैनेजमेंट करना है, आपके पास फिजिबिलिटी क्या है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म कि आप 1 से लेके 6 एस्पेक्ट यूज करें. इट मे डिपेंड कि आप सेकंड से 6 पे भी आ सकते हैं और थर्ड से 6 पे भी आ सकते हैं. सो बट द 6 एस्पेक्ट्स आर देयर. सेकंड थिंग आप देखिए, जो सेकंड पॉइंट है और जो फोर्थ पॉइंट है वो बिट सिमिलर है. What is the difference between the two? The second is at the source. आपने अपने घर में अगर डस्टबिन में कूड़े को प्रेस किया है या कंबस्टिबल पेपर को आपने बर्न किया है या आपने कुछ कबाड़ी वाले को बेचा, दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट. लेकिन जब पूरे शहर का और पूरी गली का किसी मोहल्ले का कूड़ा एक कॉमन जगह पे गया और वहां पे उसमें से मेटल, प्लास्टिक, combustible part को separate किया गया है with the help of machines and other, then it is coming at the fourth point known as separation, processing and transformation of waste at material recovery site, material recovery station. Second point पे जब आप मटेरियल को सेपरेट करेंगे कबाड़ी वाले को देने के लिए या कचरे वाले को देने के लिए, वहां पे टर्म आएगी रिसाइकलिंग. लेकिन जब आप फोर्थ पॉइंट पे पूरे एरिया का वेस्ट म्यूनिसिपैलिटी मैन पावर को यूज करके सेपरेट कर रही है, देन द टर्म इज नोन एज रिकवरी. So here these are the 6 aspects of waste management. So one we will go through about the waste generation. Indian cities are having on an average 200 grams to 800 grams per capita per day. Indian is generating. Among them, the 3 mega cities, Chennai, Kolkata, Mumbai, they have highest one. About the people living there generating about 1.01 to 800 grams of per capita per day of waste. And if you see the overall 62 million ton of waste is generated annually in country. Now the trend in waste generation, because if you see the trend of the history then the today, so in mid 70s, it varies from 150 to 350 per capita gram per day. But now if you see, it is going up to 200 to 800 per capita per gram per day is the waste generation in our country. Then whatever we are generating, municipality is collecting or other authorities are collecting 75 to 80% of the waste. Out of that, only 20 to 28% is processed and treated. So depending on urbanization, changing lifestyles, increase in consumerism, and unscientific waste handling causing the problem of environment degradation and health problems. Before that, in this data that we are saying it is increasing day by day, there is a very common saying that Dada kharide pota barte, ki in the initial time when the grandfather purchased certain items, even the grandson was using that. But nowadays, the trend become opposite. When the grandson purchases a new mobile, he will give this old mobile to his grandparents. So the point is that the mentality and the changing lifestyles and other, they are also causing the increase in the more generation of the waste in our society. Because this is the time of COVID, so I just bring one slide only for the biomedical waste generation in India. That this is the data of June up to September generated by Central Pollution Control Board. That till September, 18,000 tons of biomedical waste related to COVID, which may be gloves, PPE kits, and other, they are collected, treated, and disposed by 198 common biomedical facilities in India. And there is a data of different states you can find at the website, being the Maharashtra at the top, Delhi and Karnataka second and third place. Then if you see the recent election in Bihar, the
160 ton of biomedical waste was generated. And there is one interesting fact here that the election commission ensured कि जो भी gloves और face masks generate हुए हैं polling booth पे वो particular site पे dumping के लिए treatment के लिए पहुंचे. उसके लिए उन्होंने देखिए पहले सोचा कि हम सभी के जो वर्कर्स हैं जो इस वेस्ट को लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे उनके मोबाइल में हम लोग जीपीएस लगा देंगे सो वी विल ट्रैक वेदर इट इज रीच टू द स्टेशन और इट इज डंप इन बिटवीन बट इट वाज ए वेरी कॉस्टली अफेयर सो एक टेक्निक का यूज किया गया इलेक्शन ट्रैकिंग अनेबल्ड सिस्टम जिसको हम इलेक्ट ट्रेसेस बोलते हैं कि जब हम लोग because हम सबने we all gave the election duties and we bring the machines and deposit the electronic this EVS machines in the collection center they have a system कि they will trace us कि हम कहाँ से चले किस टाइम पे हुई that app was downloaded among the 2 members of the transportation workers who transport this waste and election commission ensure that this all biomedical waste must reach the collection center and treated properly. Why this waste is increasing? We all know increase in the population because geography, my friends in geography, they know the trend and how it is population is increasing, industrialization, then the migration of rural people, change in the lifestyle, epidemics. Then what are the factors? It may be climate, household, education, location, season, festival season, having its own type of waste generation. सर्दियों के टाइम पे संतरा मूंगफली के छिलके इज मोर गर्मियों के टाइम पे आपका गन्ने का जूस है या जो भी आपका है दैट वी आर यूजिंग लिक्विड टाइप सो दिस इज द regulations and personal habits also. Now what are the effects of waste? I think Dr. Bhupender, I am audible. Yes, you are audible, sir. Okay. सर हार्दिक जी सुनाई दे रहे हैं अच्छे से आप. Thank you. Thank you. The effect of waste is that it is anesthetic, affects our health, cause blockage of drains during rains, affect our coastal and marine environment, our climate, and may decrease the crop productivity. जो लास्ट पॉइंट है मे डिक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट है जब हम वो डंप करते हैं द प्लास्टिक विल ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस एंड इफ इट रीच इन द एग्रीकल्चर फील्ड और अगर वो छोटा सा प्लास्टिक का पीस किसी ग्रेन के ऊपर आ जाता है द ग्रेन विल नॉट एबल टू जर्मिनेट अभी की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन द साइंटिस्ट आर वरीड दैट इफ the plastic waste is continue to increase more in the later on more plastic will reach to the agriculture field and it may decrease the our crop production. Now this is the some pictures that how the solid waste problem is there. Then in the water bodies many times we all experience this thing that the water bodies are filled up with filthy waste and other. This is just I took it from the net that how the marine organism this tortoise is entangled in the polythene and it's eating this polythene and already that many aquatic animals died due to these things. Then this is the burning of the waste, this how uncontrolled burning is creating the problem of air pollution. And recently if you see that in 2007 when there was a Gazipur landfill Kundli canal में जब हुआ था कि the 2 people died and 5 injured when a huge mountain of waste it was just came to the roads on the Kundli canal and this site is spread over 70 acres and the height was 50 meters. So imagine if you this huge pile which is when it came down killing 2 people and recently every year this time thanks कि जो आपका दिवाली से नेक्स्ट डे काफी जगह पे बारिश हो गई जो पोल्यूशन था वो सेटल हो गया otherwise many time if you see every year smoke formation in national capital of Delhi और इस बार का भी डाटा है कि 10 out of 15 worst polluted site during November were from Haryana. Even it was Panipat, Kurukshetra, they all were there one by one because you know the harvesting of the crops and the season was like that it was not mixed properly and ultimately it created the problem.
So the second aspect is waste collection, that waste can be collected from individual houses, and many times that you can say, to minimize the time and cost involved in collecting waste through vehicle, public can be given instruction. Public can be given instruction, for example, जैसे कुरुक्षेत्र में है, at around 8 a.m. in the morning, the vehicle will come and he will say, नगर पालिका आपके द्वार, शहर को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करिए. The people listen this sound, they will come out and they will put the waste. 2 years before this was the thing, but then 3-4 months they separate it. They will have the, उन्होंने दो पार्टीशन कर दिए, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, कि गीला कूड़ा इसमें डालिए, सूखा कूड़ा इसमें डालिए. यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आपसे शेयर करूंगा. Even the people from municipality came to each house and they told us कि आप please 2 तरह के डस्टबिन रखिए, सूखा गीला कूड़ा अलग करिए और उसको अलग अलग उसमें डालिए. But many times maybe the time problem and other things, it may not work properly. So this is just some examples of door-to-door collection. This is the secondary collection, कि हमने कूड़ा एक बड़े डस्टबिन में डाल दिया, वहां से जो है उसको दूसरे कंटेनर में लेके डंपिंग के लिए लेके गए. So it is primary transportation from household, secondary transportation from to the landfill. These all are the things we are habitual. Then the third aspect is segregation. Segregation का meaning है कि we will separate the waste if we go for proper management of the waste. And some points are avoid mixing of the waste. Sorry, it is mixing, mixing. Do not make it liquid if it is dry. Segregation, separation into degradable and non-degradable one to recover the waste so that it can be sold. But it is a tedious process and it needs manpower. Why we are going for segregation? If segregation is done, then it will helpful in disposal. The different management aspect of disposal can be applied accordingly, that we will discuss later on. The women and the manpower, they are just separating the waste, but there is a problem in this figure. If you see that none of the staff is wearing the mask, some are wearing the gloves, but it is the people or it is the authorities to enforce them, and they must be aware that we should use them. The people who involve in segregation, they will use proper protection, personal protective equipments. This is transfer station, that from one place when the waste is collected, it should be transferred to other place. For example, कि अगर आपके सिटी से वेस्ट डिस्पोजल साइट बहुत दूर है, तो इंडिविजुअल छोटे कंटेनर को ले जाने की बजाय बड़े ट्रक में भर के वेस्ट को लेके जाया जाता है. देन इट इज नोन एज ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट. आपने वो सांवरिया मूवी में अनिल कपूर, सॉरी, जो रणवीर कपूर का गाना है या जो भी है, सोनम का गाना है, कि वेनिस सिटी जो है वो नदी के बीच में है, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बोट्स और नाव के जरिए होगा. अमेरिका की बात करें, जो अमेरिका में मैनी प्लेसेस पे बड़ी बड़ी ट्रेन्स को लगाया गया है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. हिली एरियाज में क्योंकि गाड़ी नहीं जा पाएगी तो घोड़ा गाड़ी, छोटी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया जाता है. लाइक दैट डिफरेंट मोड्स आर देयर. देन डिस्पोजल के डिफरेंट मेथड्स हैं. सबसे कॉमन जो है, we all practice, we all face, is open dumping, then control tipping and burial. So
The third one is the feeding to the animals, burning, incineration or thermal processing, sanitary landfill, composting and biogas production, vermicomposting और waste minimization के जो 7 R's हैं, we will discuss later on about recycle, reduce, recover, etc. इसमें आप देखिए जो second point है control tipping and burial, we take it from the cat. जो बिल्ली है वो डिफेकेट करने के बाद अपने वेस्ट को कवर कर देती है, सो वहीं से ही कंट्रोल टिपिंग का ऑप्शन आया. और जब उस कंट्रोल टिपिंग को आप इंजीनियर वे में करेंगे तो नंबर 5 पे हमारा टर्म बनी सैनिटरी लैंडफिलिंग. अगर आप पूरे वर्ल्ड का डाटा देखें, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे जो 2 मेथड है साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्पोजल जो है, फर्स्ट पोजीशन पे है फिफ्थ वन सैनिटरी लैंडफिलिंग और सेकंड ऑप्शन पे है इंसिनरेशन. वन बाय वन ओपन डंपिंग के लिए देखिए, जो भी आपका इनर्ट वेस्ट है या नॉन कंबस्टिबल पार्ट है या गलियों की सफाई वाला है, दैट कैन बी गो फॉर ओपन डंपिंग अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. बट this open dumping, it attracts the food and shelter for flies, rats, vermin. देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बर्निंग होगी तो एयर पोल्यूशन होगा. एंड में और जो सूरत में जो प्लेग हुआ उसका जो पीछे बेसिक रीजन था, दैट इज आल्सो uncontrolled dumping of the waste, because this open dumping will attract many vectors disease and it will not be good for public health point of view. Just now we discuss about the controlled burial by the cat method. Then the second point is leftover food from the hotels, hostel, marriage place can be given. If it is good, it can be given to the needy people. If it is spoiled or not able to consume, it can be given for the animals and the pigs. Then grinding of the waste and discharge into the sewer lines, except ones. बड़े सिटीज में और जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे क्या है, किचन में ग्राइंडर लगा दिया जाता है. किचन में ग्राइंडर लगाने पे क्या है, जो किचन का वेस्ट है वो ग्राइंडर से मिक्स होके लिक्विड वेस्ट में पाइप के थ्रू बहा दिया जाता है. लेकिन उस केस में क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है क्योंकि वहां पे बीओडी सीओडी फिर इंक्रीज हो जाता है. डंपिंग ऑफ द वाटर बॉडीज कि आपने वाटर बॉडीज में डंप कर दिया, बहुत ओल्ड मेथड है बट अभी इसको इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड कॉमनली. लैंडफिलिंग का देखिए आपका क्या है कि लैंडफिलिंग में हम क्या करते हैं कि आपने एक जगह एक वी सेलेक्ट इज साइट, वी एक्सकेवेट द साइट, वी पुट द वेस्ट, वी प्रेस द वेस्ट. प्रेस करने के बाद आपने मिट्टी की लेयर बिछाई, उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी, लाइक दैट वी आर डूइंग, दैट इज नोन एज लैंडफिलिंग. इंजीनियरिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा कि जो लैंडफिलिंग में हमारा different type of physical, chemical or biological reactions are there which produce the leachate and the landfill gas. So we have to collect the landfill gas and we have to collect and minimize the migration of leachate in, so that it will not contaminate our groundwater. So this is the pictorial presentation just of the landfill. This is, you can say how they are doing, they are putting it and they are covering with the soil. This is the diagram of secure landfilling in the case of hazardous waste. When we are landfilling or when we are putting the municipal waste or solid waste, the term is known as sanitary landfilling. But when we are keeping the hazardous waste, then it is known as secure landfilling. The same thing, there is a monitoring of the water table, there is a mechanism of leachate collection, there is the different layer of clay and other materials are there. Now, if we see the recent, or you can say the solid waste management rules of 2016, they are saying that landfill should only be used for non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible, and non-reactive waste. The point is that the minimum is the volume of waste to be landfill, the maximum is the lifetime of the landfill, क्योंकि वो ज्यादा जगह नहीं लेगा और हमारी लैंडफिल जो है वो it will work for longer period of time. Then every effort should be made to recycle or reuse
the reject to achieve the desired objective of zero waste to the landfill. Nowadays, अगर आप 5-10 साल का सिनेरियो देखें, nowadays the term is coming zero discharge, zero waste production. That we are planning in such a manner, and many countries are doing. डेनमार्क में एक जगह है कैलेंडुंग, उन्होंने भी किया है कि जीरो वेस्ट की waste of one industry is used as a product, as a raw material for other one, and the waste of that second industry will work as a raw material for the third. So in a cyclic manner they are coming to the zero waste policy and other. Then this is the diagram for composting. We all know कि पुराने टाइम पे जो कुरड़ी वाला concept है जो farmer से आया है, scientifically composting दिया. When combine all organic matter to decay, when this mixture decay, it will have the nutrients which can be used in the agriculture field for this one. And I think many of you, but it is good for us that first organized composting operation, which is reported in literature, it was carried out in our country, India, in 1930, and this process is known as Indore process. The scientific composting was started, it was from Indore, and there are different type of composting like windrow composting, static pile composting, in-vessel composting. You see in the slide कि जो height of pile है, जो कूड़े का ढेर लगाएंगे उसकी कितनी हाइट होगी, उसको आप साल में कितनी बार मिक्स करेंगे, उसमें आप एरिएशन देंगे, कितना मॉइस्चर कंटेंट रखेंगे. It is a mechanical mixing, manual mixing. Based on all such factors, the composting technique is of different type as shown in the slide. This is one picture that we are putting the garden waste and covering it so that it will take some time and degrade come. Then ये आपका compost heap है that we are putting it. जो गांव में जो है कुरड़ी का जो concept है, like that it is there. 2 to 3 year farmer is collecting it and then putting it into the agriculture field. When we are using the earthworms are known as Cinderella of earth, and the earthworm is physically a crusher, chemically a stimulator, biologically you can say it is a degrader. And when we use this earthworm to degrade the waste and when we produce the compost, then it is known as vermicomposting. And I think maybe you may have very good resource person, Professor Vinita Shukla from MDU. She is working on this aspect and she will have very this topic. I think Dr. Bhupender is organizing and maybe arranging, madam, for very interactive session in coming classes. So I'm just saying that this is the diagram and how, and many NGOs are doing, they are producing the vermicompost and they are earning money for this one. Another disposal method is incineration. Incineration का सबसे जो बड़ा advantage है that it decrease the volume of the waste. 90% decrease in the volume. 75% weight may decrease hai, but some problems are there. If it is not done properly, then it will cause air quality problem and the disposal of ash. Many times the toxic substances are present in the ash and they may have some problem during disposal. Again, the incinerators are of different type depending upon the technique, depending on which type of waste we are going to burn. And you see in the slide mass burn incinerator, which is very commonly used for the municipal solid waste. Fluidized bed incinerator, commonly used for the sewage sludge and you can say liquid and gaseous waste. Starved air for the clinical waste, rotary clean for the hazardous waste. आप इसमें देखिए जिनके नाम हैं, the name of them, they are indicating something to us that mass burn. जब आप एक घंटे में या when in one day in 24 hours we can burn 100 tons to 500 tons of waste per day, then it is mass burn incinerator and we are getting energy. How we are getting energy? The thermal energy is converted to
rotating the turbine, that is mechanical energy. Then mechanical energy is converting into electrical energy. And in many places in the world, even in India, I will show you in some slides, we are generating electricity from the waste, that is wealth from the waste. The second one is, as the name indicate, fluidized bed incinerator. Fluidized meaning is disturbed. When the furnace is disturbed, for the proper mixing of the waste, we are doing the flow of the air, and due to that the waste are mixed properly. Starved air, it is, you can say, pyrolytic, the process of pyrolysis, where less oxygen is provided. It is a two-stage combustion, primary combustion and secondary combustion. Rotary means moving one. Here the temperature goes up to 1500 degrees centigrade, and all hazardous waste is converted into molten slag. Molten slag का meaning जैसे शीशा हो जाता है, शीशे के बीच में सारा फिक्स हो जाएगा. So जो भी आपका hazardous waste है वो melt होके, so mostly we are using it for hazardous waste incinerator. This is the pictorial presentation for the municipal waste, जिसमें आपका जो है left side में जो है, it is the grades are showing, bottom ash collection is showing, furnace is there, then you can say the steam is going to rotate the turbine, and जो भी आपका air emission है उसको हमने चाहे whether we are using cyclone precipitator, bag house and other, we are cleaning the air, and finally in the extreme right chimney से आपका जो clean air है that is released into the atmosphere. Now there are many examples, including the success stories and the failures in India, where because we learn from the failure. So it's not that I'm showing the failure study, no, because we learn कि कहाँ पे गलती रही, then we will use it and we make it a best one. So some stories are there for your kind information, that Selco International Limited in Hyderabad, this is the first project of its kind in India in 2003, and they convert municipal solid waste to electricity, and they are generating 6.6 megawatt of electricity. Then come to the municipal Pune Municipal Corporation waste to energy project in Hadapsar, and it was processing 700 tons dry waste, but there was some problem, and but now I think there's some issues with that. Third one is Timarpur Refuse Incinerator cum Power Generation Status 1987. I remember when I was in 12th class or BSc, and when I was going to Delhi, it is on the right side at Karnal bypass that it was installed to produce electricity. But imagine this was a very big failure for us, because initially it was thought that we will generate energy by burning 300 tons of municipal solid waste per day, and we will generate 3.75 megawatt of electricity. 20 crores of rupees was invested on this project, but it was not work for some days, and only 21 days it ran, and finally after 5 years it was closed. The problem here in the Timarpur refuse incineration was that initial planning was not done properly, कि जो waste है, जो combustible होना चाहिए, जिसको burn होना है, as per World Bank, minimum calorific value should be 1000 to 1200 kilocalories. But जो दिल्ली का waste था, it was mixed properly, it was not separated, और उसकी जो calorific value थी वो 600 to 700 kilocalories थी, and it was not burned properly. It बाद में डीजल ऐड किया गया, दूसरे फ्यूल ऐड किए गए, but it didn't work. So we learn from this that separation of waste must be there if we go for this energy generation. It is a data, recent data, आपका 2020 का है, MNRE की वेबसाइट से I tried it, कि जो current India में waste to energy plant है, which are working now. You can also see the one is, it is 7 plants is working in India which are generating energy. Delhi में we have the 3, the first 3, Hyderabad में 2 है, Jabalpur में 1, and Chennai is 1. And if you see, maximum is 24 megawatt we are getting from Delhi Bhavana waste to energy plant,
and then 20 megawatt is from Hyderabad, and very small 2.9 megawatt from the Chennai waste to energy plant. Then there is another success story that management of the waste is recognized at international levels when two of our Indian firms, they got a Green Oscar award known as Eshadon Award for sustainable energy. One is in 2011, one is Mr. Pankaj Patel. He is the chief of Abalone Clean Energy in Gujarat, and they are producing the biomass. जो crop है उस crop से pellets बना के they are sending it to the different companies and even exporting abroad. Second is Husk Power System by Shri Ganesh Pandey जी. इन्होंने बिहार के 100 विलेज में छोटे छोटे जो है हस्क से जो राइस की स्ट्रा है उससे एनर्जी जनरेट किया है. देखिए बहुत छोटा है, 35 से 100 किलोवाट, और 100 गांव के बीच में जो है हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है. और but that efforts, you see, it replaces about 42,000 liter of kerosene and 18,000 liter of diesel per year, and it is providing employment of 300 people. So very good step, initial step, and which cover all these things. Then come to the legal and policy framework. What are the legal aspect of the waste? Because many times थोड़ा सा मैं यहाँ टॉपिक को डाइवर्ट करूंगा. Many times it came into mind that we have so many projects, we have so many policies in India, but they may not fruitful, they may not come, they may not be implemented, and we are not getting the desired result of it. Yesterday there was a lecture in my university, and some Shri Satish ji came to deliver the lecture. It's a very motivational lecture, and he mentioned that in 1916, Pandit Shri Govind Vallabh Pant ji said, and he said in Hindi, जो असरकारी है वो असरकारी होता है, जो असरकारी है वो असरकारी है. The point here is that no doubt we all teachers belong to the Sarkari community somewhere, but our students are asarkari. So when the student is motivated, because I think you may have, every of us, every year we have 100 to 200 students coming across us. My fellow colleagues are from arts and commerce side, they may have more than that of. So when we convince those students of different aspects of whether social welfare or whether of anything, then they bring the change. It's not the government who brings the change, we the people, because teacher has a very big responsibility and it's very noble profession. And I appreciate and thanks to God that I'm in this profession, so we can bring the change, and then by motivating it that we can do something in the society. So here is that there are so many policies and laws made by our Indian government time to time, and they are rectified by time to time. And the mission and the vision is that we have to minimize and we have to manage this waste properly. So the first of, if we all remember that I was in 5th class in 1984 when this Bhopal gas tragedy occurred, and it drew the government attention towards environmental damage and fatalities. कि first time the government think that, no doubt उससे पहले भी हमारे यहाँ पे different commissions were there and other, but the major issues जो था यहाँ से आया 1984 से जो है the government think of seriously thinking in some other direction, proper direction. The 1989 hazardous waste management rules came. 1998 biomedical waste management rules came into existence. Then there was a plague in 1994 in Surat, Gujarat, and it drew the attention of the government towards the municipal waste management. यहाँ से शुरू हुआ कि जो municipalities हैं, they are assigned
they are asked to collect the waste properly. They have to manage the waste properly. And then after this Surat plague, a high power committee known as Bajaj Committee was constituted, which gave several recommendations for the proper management of the solid waste. Just 2 minutes. So as an outcome of that committee, there is a formation of the municipal solid waste management and handling rules in 2000, but now we have 2016, again they were changed. In 2005, there is a establishment, you can say Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. In that, solid waste management was a submission. Our Honorable PM, he started the program of Swachh Bharat Mission, Urban and Rural, on the birthday of Mahatma Gandhi ji on 2nd October 2014, in which we have the open defecation, or you can say open defecation free, all is there, motive was there, and as per the literature, or agar aap dekhein to 2019 mein you can say many states and all India become open defecation free, but uh, it's there as per the government data. Then in 2016 we have the solid waste management rules, they came into existence. उसके साथ साथ जो हमारे existing rules हैं, जैसे आपका water prevention and control of pollution act 1974, which was amended in 78 and 88, it specifies the standards for the discharge of sewage and industrial effluent, कि sewage का और industrial waste जो निकल रहा है उसके standard क्या होने चाहिए कि वो aquatic bodies को या water को pollute ना करे. Then we have 2001 batteries management and handling rules, which fix the responsibility of the manufacturer. Importer की responsibility, assembler की responsibility fix की गई कि भाई जो used battery है वो उसको collect करेगा और उसको वापस register recycler के पास supply करेगा. 2006 में EIA assessment notification was came, where there is a provision of the requirement for environmental clearance from the statutory authorities for setting municipal solid waste processing and disposal facility. जहाँ पे भी बड़े लेवल पे डिस्पोजल फैसिलिटी, लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन होगा, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है कि वहाँ पे उस प्लांट को लगने के बाद एनवायरमेंट में क्या चेंज आएगा, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या कंट्रोल टेक्नोलॉजी विल बी यूज. That was under this EIA assessment notification. Then we became the third country after Australia and New Zealand to set up a specialized environmental tribunal. That is, we all know about National Green Tribunal Trust doing very good work under the National Green Tribunal Act. Then 2016 में ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए, जिसमें कि प्रोविजन था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीयूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, like that. Then 2016 में we have the biomedical waste management and handling rules, in which the biomedical waste was categorized into 10 categories. 10 categories के लिए कौन कौन सा disposal होगा. Different type of colored container dustbin were used for the collection of specific biomedical waste. That all was there. Then again 2016, you can say the e-waste were rectified and modified. पहले 11 में थे, बाद में 16 में रिवाइज हुए. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. Then we have construction and demolition waste rules 2016, hazardous waste and other waste management and transboundary movement tool 2016. You see that from 3 slides, I'm just trying to show you that we have so many rules and regulation
for every type of waste. But if you see in the conclusion that urban local bodies fail to implement these laws adequately. One thing is that there is somewhere failure of the rules properly. The second is when the government provide the infrastructure and the facilities, they are not properly utilized. Sometimes they don't know how to use it, and sometimes they will be fail or they will be not used, maybe negligence and other factors are there. Then there are separate authorities for different type of waste, and it is very difficult if a organization or an industry or an area is generating different type of waste, so they have to took different licenses from different organizations. So better it should be under one umbrella, so the management will be better. Now, the second aspect of the title was about issues and challenges of the municipal solid waste. And we focus on our Indian cities because the word cities and the word, they may have their own aspects and issues. More or less in Indian cities, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जो हमारा कूड़ा जो भी हमने सेकंड थर्ड स्लाइड में किया कि सिर्फ 40 से 50% ही कलेक्ट हो पाते हैं, जो अनकोलेक्टेड वेस्ट है जिसको हमने अनट्रैप नहीं किया है, अनट्रैप किया हुआ है, अगर हम उसको कलेक्ट करें, सो व्हाट वी आर डूइंग, पोटेंशियल ऑफ अनट्रैप वेस्ट क्या है, जनरेटिंग 439 मेगावाट ऑफ पावर from 32,819 tons of waste per day, we can generate this much of electricity from this waste, which is just now going for disposal and other different methods. जो second point है that we can generate 1.3 million cubic meter of biogas per day, which is equivalent to 72 megawatt of electricity from biogas. Then 5.4 million tons of compost can be generated from the biodegradable part of waste, which can be used as a fertilizer. And currently, or if you see the data, this waste collection is giving employment to 5 lakh rag pickers. More than 5 lakh rag pickers are used in this collection of the waste. So this is the power, this is the waste from the wealth we can generate if we manage this waste properly and scientifically. So what is in country now? According to the Central Pollution Control Board, this report is available free on the website. I took it from there. That so far municipal authorities have set up 2,426 composting plants in the country. 534 vermicomposting plants are working successfully in the country. 426 biogas plants are working. 40 refuse-derived fuel plant. Refuse-derived means when we will collect the waste, we will separate it, we will treat it, we will enhance this property, and we will generate the power. Then it is, you can say, refuse-derived fuel. And basically, this is for thermal heating purpose के लिए है. बॉयलर्स में यूज करना है, फर्नेस में यूज करना है, कोल के साथ मिक्सिंग करनी है. देन द लास्ट वन 13 वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट आर वर्किंग इन द कंट्री अभी एज पर 2016, लेकिन जो मैंने ऊपर की स्लाइड में दिखाया करंटली वी हैव 7 जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है. सो दिस इज द सिनेरियो दैट, और ये रिपोर्ट में स्टेट वाइज डाटा है, आप चाहे मणिपुर का लें, चाहे हिमाचल का, चाहे J&K का, ऑल स्टेट का डाटा इज देयर. And they mention how many are there, how many are functional. If anybody interested, you can go from that report in detail. Then 35 metro cities and 24 state capitals, union territories in India, many shortcoming in the existing practices used. जो shortcomings आई हैं, जो problems आई हैं, वो क्या है? Inadequate manpower. Manpower is not there, recruitment of the manpower, या फिर वो skilled manpower की बात कर लीजिए. Financial resources are not, you can say, limitation is there. Implementation of rules and machinery, use of the machines. This is the because this is also a very
reputed paper published in the international journals, जहाँ पे उन्होंने पूरे states का data लिया, पूरे states का survey किया गया, and this work was done by NIRI and CPCB together. So this paper is also free on the website and they all mention there. फिर आप चलिए कि जो कुछ failures again हुए हैं या कुछ जो incidents हैं, that is the Surat Municipal Corporation, they developed a sanitary landfill 3.6 hectares saline land को यूज किया गया खजोड़ विलेज में, जो कि सूरत से 15 किलोमीटर दूर था. But this landfill site could not use for 3 years and it is failed. What was the reason for this failure? क्योंकि the reason of the failure is that the waste was not separated properly. All type of things are dumped there and this landfill site become failure. Failure ka matlab during rainy season it become, and you can say just a pond, all type of rubbish and other is there. It's unaesthetic and all, like a lake is, you can say it's not working properly. Second one, if you see, even the smuggling of waste is reported in our country where one state will put the waste in other state. As in 2006, जो Kochi municipality के garbage truck थे, they were found, they were caught that they are putting their waste in Bandipur National Park, जो कि कर्नाटका में है. Kochi is in, can say, Tamil Nadu, I think so. So they are putting from Kochi to Karnataka, and this is the smuggling of the waste and illegal dumping of the waste in the forest. If you go for the RDF plants, कि जो हम RDF plants बना रहे हैं thermal incineration के लिए, 11 RDF plant. This is the study by CSC Delhi, that in 11 RDF plants with a capacity of 2,400 tons, which were in operation, and the rest has been already been closed. And the main problem is quality of the fuel. जो fuel है, जो combustible part, उसकी properties were not good. It was poor and it didn't fetch a good price in the market. आप फरीदाबाद और शिमला की बात कर लीजिए, वहाँ के जो RDF हैं, they are not working properly. Why? Because even जो है, they are not functional. लेकिन चंडीगढ़ वाला functional है and it is working, processing 300 tons per day of the waste since 2013. लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ, the waste to energy plant was set up by Encom Engineers Chennai. 76 crores was used and 300 tons of waste from Lucknow जो है इसको collect करके 5 megawatt of electricity was supposed to generate, but this plant was shut down. Why it was shut down? Because it could not obtain desirable quality of waste. जितना waste आना चाहिए, एक तो वो नहीं आया. जो waste आया, उसकी calorific value was not good, उसका moisture content was not good, so it doesn't produce that much of electricity that it can sustain by itself. But there are success stories in our country also, no doubt. Alpuzar city in Kerala, it managing its own waste since 2002. And this city, it does not have any landfill and no processing units. कोई landfill नहीं है, कोई processing unit नहीं है. United Nation Environmental Protection Agencies ने भी जो अपने वर्ल्ड के 12 cities के बारे में mention किया है कि जो sustainable cities हैं, उसमें इस city का नाम है. Why? Because everybody is aware. It took time to make the people aware and make to be a part of this big issue, that every citizen or every residents of this Al-Fuza city, they separate their biodegradable waste, doing it composting, yes, sending it for composting. Recyclable part is going for the kabadi wada, kachra wada for the recyclable purpose, and you will not find there. Then आप इंदौर का एग्जांपल ले लीजिए, लगातार 3 साल से स्वच्छता की रैंकिंग में इट इज एट द फर्स्ट पोजीशन इन एमपी इन इंदौर सिटी जो है. देन वी हैव गोवा, मैसूर, and they are doing good in case of solid waste management. I hereby just want to share my personal experience of Indore city. In May 2019, I visited Indore to attend one short-term course.
And because I know that this city is got second time regular ranking, first ranking in Swachh Bharat mission, so I just when I was moving in the city, surprisingly I didn't find any waste. कोई सड़क के किनारे कोई litter नहीं था, कोई कूड़ा नहीं था. Even I try to go behind the wall and behind the bush कि क्या पता लोगों ने दीवार के पीछे या झाड़ियों के पीछे फेंक दिया. But I am happy that I couldn't find any traces of waste in that city. Then I asked from the auto rickshaw person, because जो ground to earth people हैं, जो local people हैं, they will know better. Then I asked how do you did it, how you make it. Then उसने बोला कि हम लोगों को बताया गया था कि सबको एक एक कंटेनर या एक एक बैग दिया गया कि अगर आपके पास बाहर से कोई सवार या टूरिस्ट आता है, आप उसको रिक्वेस्ट करें कि कूड़ा सड़क पे ना फेंके, उस कंटेनर में डाल दें. या जो हमारी सवारी थी, जब अगर वो बाहर जैसे केले के छिलके, संतरे के छिलके, मूंगफली के छिलके अगर वो बाहर फेंकने को होती थी या खाने लगती थी, तो हम उसको वो छोटा सा कैरी बैग देते थे कि भाई इसमें डाल दो. इसके साथ साथ जो लोग, अब आप देखें जो सरप्राइजिंग है कि जो लोग ओपन में डिफेकेशन या ओपन में यूरिनेशन या ओपन में स्पिटिंग करते थे, उनकी फोटो खींच के लोकल न्यूज़पेपर में आती थी. So see the trend, how they manage it and how it took time to see the people. And I was very surprised that I visited many part of that city during my training program, and I was very happy. Maybe आप लोग भी गए होंगे, you will feel the same thing. So it is that जो भी मैंने बताया कि जो असरकारी है वही असरकारी है, कि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, they know, उनके मन में जागृत हुए, उन्होंने अपने अंदर से किया. देखिए यहाँ पे बिकॉज आई बिलोंग टू कुरुक्षेत्र एंड आप यहाँ पे देखें कि 5,200 years before Lord Krishna gave this you can say the श्री गीता का जो उपदेश दिया है, उसमें भी इन्होंने महाभारत युद्ध के टाइम पे अर्जुन को युद्ध शिक्षा थोड़ी सिखाई. अर्जुन नोज एवरीथिंग, लेकिन उसको अवेक किया, उसको प्रमोट किया कि भाई तेरे अंदर शक्ति है तो युद्ध कर सकता है. दैट इज युद्धम न करोमि. अर्जुन ने शस्त्र डाल दिया कि युद्ध नहीं करूंगा. श्री कृष्ण ने उसको उसकी विल पावर को इंक्रीज किया, उसको अवेकनिंग किया. सो आई आल्सो बिलोंग टू द सेम प्लेस. सो लाइक दैट वी कैन मोटिवेट अवर स्टूडेंट्स, वी कैन मोटिवेट द सोसाइटी, बिकॉज we are the teachers have the very big responsibility. Many time अगर आप देखिए कि आप लोगों ने भी व्हाट्सएप पे या कभी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, और मैंने इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की है, मैंने नेट पे भी और उसमें देखा प्रॉपर कि जब हमारे श्री शंकर दयाल शर्मा जी ओमान की यात्रा पे गए, तो सॉरी मस्कट या ओमान, आई डोंट रिमेम्बर द नेम कंट्री एग्जैक्टली. तो जब वो प्लेन से उतरे तो वहां का जो राजा था, जो किंग था, वो खुद अपनी गाड़ी में उनको ड्राइव करके लेके गया. ही ब्रेक द प्रोटोकॉल कि उनको लेने आया एयरपोर्ट पे, और उसने ड्राइवर की जगह खुद बैठ के गाड़ी चलाई. व्हेन द पीपल आस्क, व्हेन द कंट्री शॉक की इतना बड़ा काम किया, देन ही से मैं किसी प्रेसिडेंट को लेने नहीं आया, मैं अपने टीचर को लेने आया हूँ. He was the student in India at that time. Shri Shankar Dayal Sharma ji was his teacher. So imagine the respect of a teacher that we can bring. I'm just deviating from the topic. My point is that because जो विनय सेठी जी हैं, जो पक्षियों को बचाने में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, उनका भी यही मतलब है कि we can do, एक एक करके we can bring a change in the society. So let's come to the topic, the success stories of Alpuja, Indore, Panji and Mysore in Karnataka. Then what are the challenges we have? Challenges में देखिए जो हमारे पास challenges and जो problems आती हैं वो क्या है? The waste is generated everywhere. हर कोने में, हर गली में है. अब उसको वहाँ से collect करना, उसको manage करना, it's a challenge for us. और कभी कभी तो सिर्फ 50%, 60% एरिया कवर होता है म्यूनिसिपैलिटी से, बाकी का सारा जो है वो ओपन डंपिंग या बर्निंग में जाता है. और यू विल बी सरप्राइज कि जो म्यूनिसिपैलिटी को बजट मिलता है साल का, उसका 60 to 70% जो है वो जस्ट टोटल बजट कंज्यूम होता है कलेक्शन में, जस्ट उस वेस्ट को कलेक्ट करने में. बाकी सैलरी देना, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल या मैनेजमेंट करना, दैट इज आल्सो ए बिग चैलेंज.
Just I'm again interrupting. I think I'm audible to all of you, please. Yes, sir, you are audible. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Hardeep ji, you are audible. It contain a high proportion of producible organic fraction 60 to 70%, क्योंकि हाई मॉइस्चर कंटेंट है और लो क्लोरोफिक वैल्यू है। तो जो हमने ऊपर बात की, चाहे वो आरडीएफ की हो, चाहे वो एनर्जी जनरेशन की हो, जो फेलियर है वो यहाँ से combination of heterogeneous materials. It include pharmaceuticals, hazardous substances, which make unfit for maximum value and resource recovery. अब आप देखिए कि जो डाटा है, जो रिपोर्ट्स हैं, अगर हम सिर्फ इस वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, up to 2047 we require a additional space of 1400 square kilometer of land, और ये इतना बड़ा एरिया होगा जितना कि हमारा हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई को आप मिक्स कर लें. So this much of extra land will be required in future if we not able to manage this type of waste properly. Then what are the issues of, so challenges हमने देखा. Now what are the issues for better management? कौन कौन से issues हैं? Policy issues, जैसे that we say that proper implementation of the existing rules and regulation will be there. Financial issues, that limited resources are there with the municipalities. Technical issues, many time the workers may don't know how to use the technology, they are not familiar with the technology. एक बार fail हो गई तो दोबारा repair कैसे करना है. Then many times society is also not allowing the technique to be installed. Many times, 3-4 months in a year, you will see the example of Batinda in the newspaper, leading newspaper. There is one incinerator in Batinda city, and many times because this incinerator is near to the habitation, so people don't allow to work. कि smell आ रही है या burning है, जो भी है. That is other reason कि what was the reason behind it, but it is there. आप कुरुक्षेत्र में देख लीजिए, कुरुक्षेत्र में हर 2 साल के बाद पेपर में न्यूज आ जाएगी, लोकल पेपर में, कि जो म्युनिसिपल साइट डंपिंग थी वो भर गई या गांव वालों ने मना कर दिया डंप करने से. अगेन दे विल गो एंड सर्च अनदर साइट, they will took on the lease, they will again put up. So these are the problems that management and planning is there. So management issues में shortage of staff, motivation among workers, sportive issues जो हैं, they are sportive issues में promote awareness, education and training program. Then we can say the enhance the administrative capability of local government officials and workers, encourage private sector and NGOs and self-help groups participation to make it a big success. यहाँ पे जो है, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की का मॉडल दिया है, आप देखिए जो एरो हेड है, इट्स गोइंग डिस्पोज इज लोअर एंड पे है, अवॉइड आपका सबसे ऊपर है. ट्राई टू अवॉइड the buying of the unnecessary item and try to avoid the waste generation. No doubt waste generation is an integral part. We can minimize it, but it's difficult to stop. Then reduce, reuse, recycle, recover and dispose. This is the waste management hierarchy for the management. There are certain principles for waste management, and what are those principles for waste management? That is the proximity principle. Proximity principle says that if possible, waste should be managed close where it is generated. जहाँ पे जनरेट हो रहा है उसके आसपास ही आप उसका मैनेजमेंट करिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट विल बी मिनिमाइज. सेल्फ सफिशिएंसी प्रिंसिपल, each town, city, state, wherever possible, try to manage its own waste. We should not depend upon others
import and export, but self-sufficiency must be there for the waste management. Then the third one is polluter pay principle. Whosoever is polluting it, whosoever doing the dumping of the waste illegally or open dumping, they must bear the cost of that one. प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी, और जो आपका इंटरजनरेशनल इक्विटी है वो क्या कह रहे हैं, दे आर ऑन द concept of sustainable development, that we should take care of our future generation without compromising the need of present generation. Intergenerational में कि जो है आपका same generation, current generation must clean our own waste. Intrageneration, that we should not give to the another generation. Equitable access to suitable for all citizen. Then 7R principle. There may be more and they depend कि residential के लिए R कितने हैं, industrial के लिए R's कौन से हैं. So it will be rethink, refuse, reduce, reuse, recycle, recover, repair. In other literature, we may find out renew, refurbish. So these are the R's of the waste minimization, जिसमें reduction का जो concept है कि reducing the amount of material used per product without sacrificing the utility of that product. कि हम जो है वो product तो बनाए, लेकिन उस product में जो हमने material use करना है वो genuine हो. यहाँ पे जो है आप देखिए कि जो पुराने टाइम के कंप्यूटर्स, टीवी या ऑडियो सिस्टम थे या इवन एम्बेसडर कार्स, दे वर वेरी हैवी. सो नाउ द टेक्निक्स आर कमिंग कि आपका जो मोबाइल फोन है उसी में ही आपका कैमरा है, उसी में ही क्लॉक है, उसी में ही आपका कंप्यूटर है, एवरीथिंग इज देयर. सो we are not sacrificing the utility of that product, but we are reducing the amount of that material used per product. Increasing the lifetime of a product. Increasing the lifetime means we will use the product for better period. आप उसको ये नहीं कि I'm giving you some example कि in some countries there are certain areas की जो क्लोथ हैं, जो लोग हैं वो एक दिन कपड़े पहनेंगे, they are so cheap clothes कि next day they are going in the dustbin. आज पहने next day dustbin में है. That should not be there. दूसरा concept देखिए कि there are certain type of clothes coming nowadays कि आपने सुबह कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद आप शाम को घर आए, आप उन्हीं कपड़ों में सो जाइए, सुबह आप वॉशरूम जाके उन्हीं कपड़ों में नहा लीजिए और वो बिल्कुल उनमें रिंकल नहीं होगा और उनमें बिल्कुल प्रेस की प्रॉब्लम नहीं है. That is also not good hygienic point of view. The point is that increasing the lifetime, ये भी नहीं कि कंजूसी करनी है कि भाई आप एक चीज को ऐसे पहनिए कि मैं I'm saving the resources, I'm doing good. No, because being the teacher and being the human being is a social animal. हमारा जो presentable है, presentation है, जो style है, वो that should not be, उसको इफेक्ट नहीं करना है. यहाँ पे मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ कि there was a businessman और उसने इतना wealth इकट्ठा किया that he was on the deathbed. Then he asked his CA and accountant कि आप आइए, he know कि एक दो दिन में जाने की तैयारी है, and he asked कि भाई जो मैंने इतनी wealth इकट्ठी की है, अगर मेरी generations कोई काम ना करें तो कितनी पीढ़ियां मेरी, how many generation will survive? It took 6 hours for the accountant and CA to work, and they say, sir, if the coming generation do not do anything, 48 generation will survive. So much of wealth you accumulated for them. And the old man died, saying the words, what will happen to my 49th generation? The point is that इतना भी कंजूस ना हो कि अपने लिए सर्वाइव किया, इतना भी नहीं यूज करना कि वो आप ही खत्म कर दें. So that the coming generation जो है वो हमारी आत्मा की शांति के लिए, जो हिंदुज्म में श्राद्ध है या चर्च में प्रेयर है, वो भी ना करें कि दादा परदादा सब खा गए, सारी धरती वेस्ट हो गई, सारे रिसोर्सेज यूज हो गए. Not like that. Then the third one is eliminating the need of the product.
आप ये सोचिए कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या I actually need it, that then we can go for certain change in the ourselves and in the society. That is reduction. अब आप आइए reuse पे कि ये हमारी integral part of society है. I also did it and I don't have shame in accepting कि I wear the cloth of my elder brother, my cousin brother and my younger brother wear my clothes. बड़ा कॉमन पार्ट था सोसाइटी में, लेकिन आज के टाइम पे बच्चे देखिए, दे विल नॉट, सबको अपना मोबाइल चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, सबके पास सेम कलर का फोन हो, सेम कलर का पेन हो, सबके लाइक यू ऑल नो ऑल दिस थिंग्स. सो बट रीयूज इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो एम्प्टी कंटेनर हो, चाहे वो बोतल्स हो, खाली बोतल्स हो पुराने टाइम पे, लाइक दैट. देन रिसाइकलिंग जैसे ऊपर डिस्कस किया कि हम अपने घर का जो मेटल्स, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास है उसको घर पे सेपरेट करके वी कैन गो डिड इट. आप उसको कबाड़ी वाले को दे दीजिए, एनजीओस को दे दीजिए, सोसाइटीज को दे दीजिए. रिसाइकलिंग और रिकवरी करने से देखिए क्या होगा. रिसाइकलिंग और रिकवरी करने से जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, एक तो उसकी बचत होगी क्योंकि आप ऑलरेडी यूज्ड रिसोर्स को रीयूज कर रहे हैं. नेचुरल रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो सब की सब बच जाएंगी. सो हमारा जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा. दैट इज द मोटिव बिहाइंड दिस रिसाइकलिंग एंड रिकवरी. रिकवरी के बारे में डिस्कस किया कि आप उसको एक मैटी रिकवरेशन पे जाके आप उसको सेपरेट करके यू कैन गो फॉर द सेम थिंग. रीथिंक, डिजाइनिंग प्रोडक्ट टू बी रीफिलेबल और रीयूजेबल कि जो भी हमारे जैसे हम घरों में आजकल हैंड वॉश है या जो लिक्विड सोप यूज कर रहे हैं, we can buy a big refill of that hand wash, liquid hand wash, and we can refill the container and reuse it again and again. रिपेयरिंग ऑफ द आइटम्स, आप रिपेयर कर लीजिए, पहले रिपेयर कराइए आइटम्स को, देन गो फॉर द बाइंग द न्यू वन. फिर आप देखिए कि जो आपका रिसाइकल पेपर है, इफ वी कैन गो रिसाइकलिंग ऑफ 1 टन ऑफ पेपर, अगर 1 टन ऑफ पेपर को रिसाइकल करना है, देन वी कैन सेव 17 ट्रीज, 7,000 gallons of water, 380 gallons of oil, 3 cubic yards of landfill space, and इतनी एनर्जी हम बचा सकते हैं कि वो 6 महीने के लिए घर का एवरेज एनर्जी बजट भी निकाल देगी. सो दिस इज द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दैट even recycling of one item will be so much beneficial for us. अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि that reduce, reuse and recycle we can go for it. Then the म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन की बात करें, माय पॉइंट इज इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट. इंटीग्रेशन का मतलब कंबाइनिंग. कंबाइनिंग किसकी कंबाइनिंग होगी एंड हाउ इट विल बी सक्सेसफुल व्हेन ऑल 6 कंपोनेंट एज शोइंग इन द स्लाइड, they will work together. How they will work? That you can starting from the lower side, the people, then waste collectors, government agencies, they will do their work, use the technology, best technology available, enroll the NGOs and private companies, then people can go for recycling units. Then when all these are interlinked, intermingled, interconnected, interdependent, then you can say it is an integrated waste management and will be successful. Now, what are the possible solutions? So before going this slide again, I just want to share, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ, my friends के साथ मैंने share किया है experience and I like to share it, you people also. I like that one. मैंने अपनी शायद एमटेक पूरी कर ली थी, एमटेक और एनर्जी एनवायरनमेंट में, एंड आई वाज डूइंग माय पीएचडी. और जब आप उस एज में होते ना, देन यू से कि भाई मेरे को ही सबसे ज्यादा जानकारी है, आई एम गोइंग टू बी ए डॉक्टर लाइक दैट, मे बी मेरे मन में भी शायद आया होगा. सो आई विजिट
I visit Ujjain in 1999 या 2000 के आसपास with my friend. उज्जैन से हम लोग गए महेश्वर. महेश्वर is you can say famous for देवी अहिल्याबाई होलकर, उनकी राजधानी रहा है किसी टाइम पे. So वहाँ पे when I was there, so a old woman of 60 year or more than that, he was selling सीताफल. जो सीताफल बाजार में आता है ना हरे से रंग का, जिसको फ्रूट के तौर पे हमारे नॉर्थ इंडिया में तो थोड़ा कम मिलता है, वहां पे उस टाइम पे उसका पूरा सीजन था और वो शायद 10 रुपए किलो बेच रहे थे. देन आई बाय 1 kg ऑफ सीताफल फ्रॉम दैट ओल्ड लेडी. मैंने उसको बोला, माँ क्या मुझे पॉलिथीन देंगी? एंड यू विल बी सरप्राइज, आई सरप्राइज कि मैं तो शायद एमटेक करके पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आया. उस लेडी ने आंसर दिया कि मुझे अपना अगला जन्म नहीं खराब करना है. एंड आई वाज सरप्राइज कि भाई ये क्या आंसर. मैंने पूछा, अम्मा कैसे? देन ही सेज कि बेटा मैंने सुना है इस पॉलीथीन को फेंकने के बाद जब गाय खाएगी, गाय की डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, और मेरे पे गो हत्या का पाप लगेगा. देखिए शायद वो लेडी आई पता नहीं कितना पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे लेसन दिया. एंड आई एक्सेप्ट दैट वर्डिंग, आई एक्सेप्ट दैट ब्लेसिंग कि हाँ, क्योंकि एजुकेशन और नॉलेज ऐसी चीज है कि जैसे सोना कभी नाले में पड़ा हो तो हम नाले से भी सोना उठाते हुए हिचकिचाते नहीं है. चोरी से उठा लेंगे, घर जाके धो लेंगे, चाहे गंगा जल में धोना पड़े, लेकिन हम उसे यूज करते हैं. ऐसे ही नॉलेज है, कोई भी दे, कहीं से दे, वी शुड बी एक्सेप्टेबल, वी शुड बी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट गुड वन. सो यहीं पे ही जो सॉल्यूशंस हैं कि वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी. आप लोग मुझे सिखा रहे हैं, मैं आप लोगों से सीखूंगा, क्योंकि टीचिंग इज अ रेगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड गेटिंग, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं. The problem is not to find the right technology for waste processing. Problem ये नहीं है. Possible problem, the problem is to integrate the technology. कि उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है. कहाँ से इंटीग्रेट करना है, कहाँ से शुरू करना है? हाउस होल्ड लेवल से, घर से ही उस कूड़े को सेपरेट करिए. उसके बाद कलेक्शन पे आइए. ट्रांसपोर्टेशन जब अच्छे से, कलेक्शन सभी जगह से होना चाहिए सिटी का, क्योंकि जैसा मैंने ऊपर की स्लाइड में दिखाया कि कभी कभी 50-60% ही सिटी में कलेक्शन हुआ और रेस्ट इज गोइंग फॉर एन ओपन डंपिंग एंड अनकंट्रोल्ड बर्निंग. नॉट लाइक दैट. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो, डिस्पोजल साइट तक हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि जब वो ट्रक्स वेस्ट को लेके जाते हैं, ऊपर से अनओपन, ऊपर से ओपन है, कवरिंग नहीं है, कूड़ा गिरता जा रहा है. आप लोग भी गाड़ी या स्कूटर साथ में रोक लेंगे साइड में कि भाई पहले से जाने दे, सुबह का दिन खराब हो जाएगा. या फिर क्या है कि कभी कभी डिस्पोजल साइट पे नहीं गए, रास्ते में कहीं खाली जगह देखे वहां पे गिरा दिया. सो दैट आर द प्रॉब्लम. सो दैट यू कैन से इंटीग्रेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन सच ए मैनर, जो लास्ट लाइन कह रही है, that they must be affordable. क्योंकि मनी की बात है, इकोनॉमिक्स की बात है. many of my fellow colleagues, आप लोग जो है मे बी ऑफ इकोनॉमिक्स, you know better than me, and affordable and manageable by the local city administration. Then what we can do, अगर हमसे बात की जाए, मैं और आप क्या कर सकते हैं? I try to do, and मैं भी कोशिश करता हूँ, भाई शायद आप लोग भी डेफिनेटली कर रहे हैं. I think so that we can reduce unnecessary packaging. Reduce unnecessary packaging of the items. ये नहीं कि बाजार में पॉलिथीन उससे लिया, फिर उसको छोटे पॉलिथीन को बड़े पॉलिथीन में, बड़े को सबसे बड़े में घर पे आए और आके सामान निकाला, सारे पॉलिथीन को जस्ट फोल्ड किया और डस्टबिन के हवाले. नॉट लाइक दैट. ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स. रीयूज द आइटम्स विच वी कैन. ऊपर अभी डिस्कस किया है कि रीयूज करना है आइटम्स को, अगर हम कर सकते हैं. बेटर टू हैव जूट क्लॉथ. आप अपना बैग लेके जाइए. अभी काफी दुकानों पे है, अगर आप मॉल्स में भी गए हैं, दे विल चार्ज 15 रुपीज फॉर द क्लॉथ बैग या 5 रुपीज फॉर द स्मॉल वन. या कुछ आपने भी नोटिस किया होगा, जो प्लास्टिक के पॉलिथीन हैं उसके ऊपर रिसाइक्लेबल या रिसाइक्लेबल का सिंबल लगा हुआ है, उस जगह पे लिखा है कि आप अपना कैरी बैग अपने साथ लेके आइए. सो दिस इज ए स्टार्ट. We can have our own contribution in that one. Avoid plastic bags from the shops. आप मना कर सकते हैं.
यूज डबल साइड ऑफ द पेपर, फोटोकॉपी करना है, लिखना है, आप डबल साइड पे लिखिए, उससे पेपर की वेस्टेज विल बी रिड्यूस। एंड अभी हमने जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर किया है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। हैव द हैबिट ऑफ रिसाइकलिंग, की आइटम्स को हम कोशिश करें रिसाइकलिंग के लिए देने के लिए, बजाय किसको जस्ट फेंकने के लिए। This is the second last slide of my presentation, that we can use durable towels, tablecloths, napkin, glasses and cups. जो हमारे ग्लासेस हैं, आई थिंक मैंने भी जब लास्ट टाइम यहाँ HRDC UGC का जो खानपुर कला में जो कोर्स किया था, इट वाज फिजिकली आई अटेंडेड दैट वन, डॉक्टर भूपेंद्र वाज कोऑर्डिनेटर दैट। सो पहले दिन जाके हम सबकी फोटोग्राफ हुई, उसके बाद हमें एक कप मिला, उस कप के ऊपर सबकी फोटो, सारे ग्रुप में सारे मेंबर्स की, आई थिंक जो विवेक दांगी जी हैं, ही रिमेंबर्स दैट। और हमने पूरा 15 के 15 दिन, बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, 2 संडे थे, 13 days we use that cup, everybody bring its, हमने वहीं पे कप रखा, वहीं पे कप को धो के उसमें ही दोबारा, क्योंकि 2 टाइम चाय मिलती थी, so that you can, this is the tradition that the HRDC Khanpur Kala has started, very good initiative. Then we go for afforestation, 2 दिन, एक दिन afforestation भी किया वहाँ पे। In the same manner, donate or exchange old books and clothes, computer, excess building material, old equipment to local organization, कि आप जो है कोशिश करें exchange की, जो needy है उसको हम दें, ताकि it will be benefit for him also. Then use of email in place of conventional paper mail, आजकल तो वैसे पोस्ट का ट्रेंड काफी कम है, और न्यूज़पेपर वगैरह भी ऑनलाइन ट्रेंड, क्योंकि जब से कोविड हुआ, इनिशियली वी ऑल हेजिटेट टू यूज द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन, पहले धूप में रखी, फिर स्प्रे किया, देन वी यूज। एंड माय लास्ट, आई ऑलवेज अपील टू ऑल द पार्टिसिपेंट एंड माय फेलो फ्रेंड्स including you, that do not pack food in polythene, as animals do not know how to open. भाई जानवर को नहीं पता है कि उसको पॉलिथीन कैसे ओपन करना है, वो तो सारे का सारा जो है उसको खाएगा। और क्या है कि जो भी जैसे कि खाने का सामान है, आप पॉलिथीन के बीच में अगर डालें तो उसकी गांठ मत मारें, उसको बांध के मत फेंकें। क्यों? बिकॉज इंडिया का डाटा है कि 100 कैटल्स, आई एम यूजिंग द वर्ड कैटल, इसमें कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग एनी कास्ट एंड अदर रिलीजन, but it is a data that 100 cattle die every day in our country due to the eating of the plastic bag. Even our own study, हमने भी study किया कि एक animal के बीच में से, there is one of my friend, he's a veterinary doctor, so we did one work, एक animal की surgery की गई, उसके बीच में से 20-35 kg, and that paper is available free on the website, आप देख सकते हैं, plastic waste और plastic bags का paper है, maybe my शायद मेरे नाम से if you डालेंगे it may come, I'm not publicizing myself, but आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं in your respective areas. The 20 to 35 kg of plastic bag was found in dead cow stomach. Then these are some of the references which I used to prepare this, some of my work, some of experience sharing with you people like that. And thanks a lot for giving me time, sincerely listening this presentation. And if you have any queries and others, I will be very happy. We can share experience also. Thank you, Dr. Hardeep. Thank you. Yes, the session is open for question. Resource person. Dr. Bhupender, if you say, or if there is a time, so I can have some other presentation, because still there is a time, if you say. No, Hardeep sir, if the participant have any question, first of all, they may ask question. If they have no question, then we can proceed for next session. Hello, am I audible? सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir. तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, सर से कुछ डिस्कस करना हो? नमस्कार सर। Okay, sir. First of all, I would like to thank Dr. Hardeep Rai Sharma, and because he was my senior in the Guru Jambeshwar University, and sir, I'm very much delighted to
see you on this say refresher course, and your way of presentation is so nice, sir, and your way of say speaking, that you are soft spoken, and your presentation is extremely say good, sir. It is excellent, sir. So for this, I would like to thank sir once again. Hello. Thank you, Sanjay. Thank you for the kind words for me. हेलो हेलो, जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। आ रही है जैसे सर। हरदीप सर ने अभी बताया, केरला का एग्जाम्पल दिया था। लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने केरला विजिट किया था। केरला के जो गांव हैं हमारे शहरों से साफ सुंदर हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम इंदौर की बात कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के बाद जो रैंकिंग मिल रही है हर बार पिछले 3 साल से, उसको आप हैरान होंगे, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव अपने इंडिया में है। मेघालय में एक गांव है, उसका नाम शायद मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, लिनोविंग करके नाम है, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, Yes, sir. दैट इज इन इंडिया। No, this is और the cleanest village in Asia. यस, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया इन इंडिया। तो अगर हम ये कहें ना हमारे इंडिया में कुछ नहीं है जो लोग करते हैं। अभी 10 दिन पहले जी न्यूज पे एक डीएनए में रिपोर्ट दिखाई थी। कर्नाटक में बेंगलोर के आसपास कोई कुर्ग करके जगह है, वहां पे रोड पे कोई टूरिस्ट गए, उन्होंने लिटरिंग की और वो गंदगी फेंक के अपनी कार में से बाहर रोड के किनारे चले गए। तो वहां जो लोकल पीपल रहते थे उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने कैमरे से चेक करवाया अभी कौन सी गाड़ियां यहाँ से निकली है, कौन कौन गए हैं यहाँ से जो ये गंदगी फेंक के गए हैं। तो 80 किलोमीटर दूर उस रोड पे जाके पता लगा भी इस गाड़ी से कचरा बाहर फेंका गया था, उसमें शायद रैपर थे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। 80 किलोमीटर आगे जाके उन लोगों को इंसिस्ट किया गया वापस चलिए, अपना कूड़ा उठाइए और अपने घर लेके जाइए। तो हमारे इंडिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है लोग करने वाले नहीं है, करते हैं करने वाले। अब ये देख के हैरानी होती है, पूरी 15 मिनट की उन्होंने कवर स्टोरी दिखाई थी जी न्यूज पे। 80 किलोमीटर आगे से उस गाड़ी वालों को पकड़ के लाए, अपना कचरा उठाइए और साथ लेके जाइए, डस्टबिन में फेंकिए। तो इंडिया में भी लोग काम करने वाले काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ भी लोग हैं जो प्रॉपरली उसको मैनेज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, रिकवरी करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ऐसे लोग हैं। इवन अपने हरियाणा में है काफी लोग जो अपना जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपने घर पे ही उसको कंपोस्ट बना रहे हैं। बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो हरदीप सर के बारे में मैं आपको बात नहीं बताई। डॉक्टर हरदीप और मैं, हम दोनों बैचमेट, क्लासमेट, हमने एमएससी, एमटेक, पीएचडी इकट्ठे किया है और हम 1994 से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आई एम लकी, आई हैव सच ए नाइस फ्रेंड, सच ए सॉफ्ट स्पोकन फ्रेंड। नाउ ज्ञान सर, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? बस हाँ डॉक्टर साहब, मैं बस ये शेयर करना चाह रहा था कि जैसे हम ओपन डेफिकेशन का सर ने जिक्र किया था बीच में। ओपन डेफिकेशन की अगर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 2005 और 6 के आसपास से, मैं यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से एक जीवीए हुआ करता था, ग्राम विकास आंदोलन। उसके अंदर एक निर्मल ग्राम योजना हुआ करती थी और आजकल वो आदर्श ग्राम के नाम से या स्वच्छ भारत अभियान के नाम से चल रहा है। तो हाँ जी, हाँ जी। इसमें 2-4 फैक्ट्स यही न्यूज चैनल से कह लो या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनसे 2-4 बातें जैसे समझ में आई। हरियाणा गवर्नमेंट ने देखा कि लोग मान ही नहीं रहे हैं, ओपन डेफिकेशन को नहीं फ्री होना चाह रहे हैं। तो पीआरआई मेंबर को, ग्राम पंचायत मेंबर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो सुबह जो मेन पॉइंट होते हैं 2-4 गांव के बाहर खेतों में जहाँ पे लोग ओपन डेफिकेशन के लिए जाते हैं, कि वहां खड़े हो जाए वो और लोगों को रोकें। और लगभग 1 महीने बाद या फिर ये कह लो 10-15 दिनों बाद लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया कि अब ठीक है, अब हमारा गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। तो जैसे लगभग 6-7 बजे के आसपास सरपंच या फिर पंचायत मेंबर जाते और उनको लगा कि अब कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो 9-10 बजे के आसपास जाके देखें, फिर वही हाल, खेतों में वही मिले। तो लोग हैरान। एक्चुअली लोगों ने टाइम टेबल अपना चेंज कर दिया। लोग अपना काम 4 बजे से 5 बजे जाके करने लगे, सुबह कराए। तो वास्तव में ये ज्यादातर बिहेवियर चेंज या फिर मेंटालिटी चेंज वाली बात है। वो डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत बार बार उठाई कि जब तक कलेक्टिव अप्रोच नहीं होगी, एनजीओ, बिल्कुल गवर्नमेंट, पब्लिक बिल्कुल रिलेशन, वो बिल्कुल। सभी। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा यही एक क्वेश्चन था, क्योंकि हम तो काफी जूनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, सर का डेफिनेटली हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो कलेक्टिव अप्रोच इंश्योर करने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहब? क्योंकि गवर्नमेंट, पीआरआई मेंबर, पंचायतें भी और एक आम आदमी, कॉमन मैन कैसे मिलके काम कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि
एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म के बाहर जब हम इस कोर्स से बाहर निकलेंगे तब एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए स्कूल, एज ए कॉलेज हम सरपंचों के साथ, गांव के आम आदमी के साथ मिलकर इस तरीके के फोरम बने, क्योंकि हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि हरियाणा में उस तरीके की सिविल सोसाइटीज नहीं है जैसे राजस्थान और जो हार्ड स्टेट है, जो पुरानी कॉन्सेप्ट हुआ करती थी बीमारू स्टेट्स, तो उन स्टेट्स में एनजीओ बड़ा अच्छा काम कर रही है सिविल सोसाइटी, बट वी आर अनलकी कि हरियाणा में उतनी अच्छी एनजीओ नहीं है। तो ये कलेक्टिव अप्रोच इंश्योर करना बड़ा जरूरी है, बट बड़ा डिफिकल्ट सा भी हो जाता है कई बार डॉक्टर साहब। बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा सही इस कह रहे बारे हैं। जब तक कम्युनिटी प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट सक्सेस नहीं कर सकती। हाँ जी हरदीप सर, क्या राय है आपकी इस बारे में जो ज्ञान सर बात कर रहे थे? ज्ञान सर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और यही क्वेश्चन कल एक मेरे कुलीग ने पूछा था जो हमारे यहाँ पे आए थे रिसोर्स पर्सन लेक्चर देने के लिए। और उन्होंने जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जो असरकारी है वही असरकारी है, उन्होंने फिर आगे दूसरी लाइन जो बोली, मैं उसको नहीं आप लोगों से शेयर किया। उन्होंने बोला कि लेकिन अगर सामने वाले को समझाना है तो हमारा खुद का नैतिक बल, हमारी खुद की ऑनेस्टी इतनी हो कि सामने वाले पे असर पड़े। तो जैसा विनय सेठी जी काम कर रहे हैं पक्षियों को बचाने पे, या जो भी है कि कहने वाले का जो एक तरीका है, कहने वाले का खुद का मतलब कि जब तक नहीं होगा तब तक शायद, क्योंकि हम टीचर हैं और देखिए टीचर की जो मोरल वैल्यूज हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम किसी को कहते हैं वो कितना उसको लेगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा जो ज्ञान सर ने बोला कि वेरी राइट कि लोगों ने टाइम चेंज कर लिया, और जो सरपंच हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी जो है उन्होंने कोशिश की। मेंटेलिटी चेंज करने में टाइम लगता है। यहाँ पे मैं एक और चीज भी ऐड करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई वाज शेयरिंग सम साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर फ्रॉम हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नीलोखेड़ी में है। उन लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी स्वच्छ भारत मिशन में हरियाणा के गांव में जाके देखने की कि भाई वो ओपन डिफेकेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं जस्ट आप प्लीज इसको माइंड मत करिएगा कि आउट ऑफ द वे। ही वाज शेयरिंग विद मी कि डॉक्टर साहब हम गए वहां पे, हमने ओपन डेफिकेशन देखा और हमने इसको कोट कर दिया कि दिस विलेज फाउंड दैट पीपल आर डिफिकेटिंग इन ओपन। पीछे पीछे एसडीएम डीसी का फोन आता है ऊपर से कि नहीं आप इसको कोट मत करिए क्योंकि हमें उसकी वो नहीं मिलेगी, दिस विलेज और दिस डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी ओपन डेफिकेशन फ्री इफ यू राइट इट, एंड मेनी टाइम इट हैपन। सो देखिए दोनों तरीके से है। वी कैन डू आवर एफर्ट्स, जो एफर्ट्स हैं वो या तो समझाने से, थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं कि रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग हैं, आप मेनी ऑफ यू डेफिनेटली विजिटेड द फॉरेन कंट्रीज, वहां पे स्पिटिंग करना, वहां पे जो है कूड़ा फेंकना या अनसिविलाइज बिहेवियर करने पे हम नहीं करेंगे सिंगापुर वगैरह में। सेम लोग जब हम यहाँ आ जाते हैं वी विल डू द सेम थिंग ना, क्यों भाई? हमारे वी नो इट, इट इज देयर कि नहीं करना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ना कहीं हम लोग उसको ना एक क्या बोलेंगे, लिबरल लिबरल ले लेते हैं या नहीं फिर सही। अपना राइट लेते हैं, लाइक दैट। सो मैं ज्ञान मेहरा जी आप सही हैं, लेकिन वही है कि इकट्ठे होने से, एक साथ काम करने से शायद कुछ चेंज है और वो आएगा, इट विल डेफिनेटली कम। थैंक यू। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा हरदीप सर इसमें। एक्चुअली एटीट्यूड की कमी है हमारे यहाँ। पोल्यूशन कोई इश्यू नहीं था, बट जो हमारा एटीट्यूड जो चेंज हुआ ना, कैजुअल, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे गड़बड़ बढ़ी। नहीं, हमारे यहाँ इश्यू नहीं था। बाकी हम स्वच्छ भारत मिशन की जब बात करते हैं, जब ये लागू किया गया था, आज आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, इन बातों को मानते हैं और करते हैं और बड़ों को भी रोकते हैं, फर्क पड़ता है, चेंज आ रहा है। बिल्कुल सर, अगर हम मेट्रो का एग्जांपल लें डॉक्टर साहब, अगर हम भारतीय रेलवे में बैठे हैं तो वहाँ पे मुंगरे भी फेंक रहे हैं, और वहाँ पे वॉशरूम्स की क्या कंडीशन है, जैसे मेट्रो में हम एकदम से अपना बिहेवियर चेंज भी कर लेते हैं। तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल सर, लोग चेंज बिल्कुल। कर लेते हैं, बस वो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हरदीप जी ने बोला कि हम थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं। जहाँ हमें हाँ लगता है लिबर्टी मिल रही है वहाँ लिबर्टी ले ले, मेट्रो में लग रहा है कि यहाँ लिबर्टी नहीं है, वहाँ भी थोड़ा, वहाँ कहीं ना कहीं ये बात सही है सर। मेंटालिटी, अपना एटीट्यूड, बिहेवियर, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और धीरे धीरे चेंज हो भी रहा है सर। बात सही है आप लोगों की, चेंज हो बिल्कुल भी रहा है बिल्कुल सर, नो डाउट। बिल्कुल
सर मेरा ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। हरदीप सर, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा, इतना नाइस प्रेजेंटेशन। माई सेल्फ थैंक यू विनय विनय सेठी जी, फ्रॉम थैंक यू हरिद्वार। जी। अच्छा सर, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत सुंदर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। Anyone, सर any question? मैं भी सर मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर हरदीप राय सर से। मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। राकेश जी हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, डॉक्टर हरदीप राय शर्मा सर ने बहुत अच्छा मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छा बताया। ये सब बेनिफिशियल है सभी के लिए। और 3-4 बातें सर मुझे इनकी बहुत अच्छी बताई, इन्होंने प्रेरणाप्रद बताई। जैसे ओमान का राजा जो है भाई भारत के राष्ट्रपति को लेने गाड़ी से जब ड्राइवर को हटाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा भाई आप ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध कर रहे हो। कहने लगे नहीं, मैं एक राष्ट्रपति को लेने नहीं, मैं एक टीचर को लेने आया हूँ। तो टीचर और स्टूडेंट का मतलब जो संबंध कितना प्रेरणाप्रद बताया उन्होंने कि मैं टीचर को लेने आया, मेरे टीचर रहे हैं एस डी शर्मा, ये राष्ट्रपति नहीं है। और एक बताया सर उन्होंने, वेल्थ जो है इतना भी नहीं होना चाहिए, वेल्थ परसेंट 48 जनरेशन लोग मेरी बैठ के खावे, कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें उच्च करने की। तो केवल अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए उतना आदमी को होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। और एक बात इन्होंने उदाहरण दिया सर उज्जैन का। ये गए थे उज्जैन में, वहां से कद्दू लिया इन्होंने 1 किलो, और उससे महिला से लेडीज से मांगे पॉलीथीन, तो उसने कितना अच्छा जवाब दिया कि मैं अपना अगला जन्म नहीं खराब करूंगी पॉलीथीन देके, क्योंकि पॉलीथीन डाल दोगे वो गाय खा लेगी, गाय जैसे से मर जाएगी। और एक और बताई सर इन्होंने, टीचिंग इज ए रेगुलर प्रोसीजर ऑफ लर्निंग। तो इनके इन बातों से सर मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा इनका लेक्चर रहा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू अत्रे जी। आप सबकी लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंस जरूर आए होंगे जी जी और जी जी हम उनसे जरूर आगे बढ़ते हैं। यही एक जी कंटिन्यूस सर, लाइफ का प्रोसेस है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सर आज। दांगी सर, आप कुछ यस डिस्कस सर। करना चाहते थे? नहीं सर, बहुत क्लियर टॉपिक था, सब अच्छे से समझ में आया। Anyone, he or she थैंक यू want to ask दांगी जी। question? सर वैसे एक क्वेश्चन है, बहुत सारे मतलब वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, पर चाहे कोई भी म्यूनिसिपैलिटी देख लो, चाहे रोहतक देख लो, झज्जर देख लो, सोनीपत देख लो, फाइनली सब लोग जलाते ही हैं और मतलब इसको प्रोसेस ना के बराबर करते हैं। ऐसा क्यों है? इतने सारे एग्जाम मतलब तरीके हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उसके बाद भी क्यों इसको जलाते ही क्यों है? देखिए इसमें जो इशू है ना, अभी हमने डिस्कस किया दांगी साहब की, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो क्या हम उसे यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते, और अगर अवेलेबल यूज करना जानते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, उसका हमारे पास यूज करने के लिए बजट या कितना है। और ये तो गवर्नमेंट इशू है, गवर्नमेंट के पास ना टेक्नोलॉजी की कमी है ना बजट की कमी है। लेकिन दांगे साहब इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वेस्ट जनरेशन का डाटा है ना, वो मैंने आपको एक डाटा दिखाया कि मैंने आपको 70s 80s और 2000 और 2012 के 4 डाटा शेयर किए, जिसमें 120 ग्राम पर कैपिटा पर डे से 800 ग्राम पर कैपिटा पर डे का वेस्ट जनरेशन का डाटा था। अब एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए ब्यूरोक्रेट, आपने 70s का डाटा उठा लिया कि भाई एक आदमी, वन पर्सन इज जनरेटिंग 350 ग्राम पर डे ऑफ द वेस्ट। उसके बेस पे आपने जो था गवर्नमेंट से बजट ले लिया। लेकिन आज का डाटा आप लीजिए, आज का डाटा 750 ग्राम्स का है। तो वो जो 400 ग्राम का डिफरेंस आया, उसको मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो जैसे विनय जी जो है वो हरिद्वार से हैं, मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जो नमामि गंगे तहत जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं या लगने हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इतना पुराना शहर है कि म्यूनिसिपैलिटी या सिविल इंजीनियर्स को भी नहीं पता कि वो जो नाला है, सोता नाई नाला कह लो या जो भी नाले हैं, वो कहाँ कहाँ से गंगा जी में आके मिल रहे हैं, या किसी किसी एरिया में तो जो है वो सीवरेज है कि नहीं है।
दैट इज द पॉइंट. सो यहाँ पे जो बात है कि इंफॉर्मेशन होने की बात, हाउ मच डेटा वी हैव, व्हाट सॉल्यूशन वी कैन डू फॉर दैट. और सबसे अच्छी बात है कि भी आग लगा तो अपने आप बुझ जाएगा. लेकिन आजकल आप देखिए टीवी में, न्यूज में, कल की ही न्यूज पेपर में था अमर उजाला में कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है वो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग हुई, एंड दे डिड इट फ्रॉम रिमोट सेंसिंग वन. टेक्नोलॉजी इज देयर, बट अगर आप उसको कंफाइन करने सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है आपने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे ओपन बर्निंग हुई, इस म्यूनिसिपैलिटी ने किया, लेकिन अगर हम उसको फाइंड करने जाएं, अगर हम उसको कहने जाएं ना, बहुत दिक्कत आ जाती है जी. बहुत, यानी कि देयर आर सो मेनी ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज. एक मिनट, फार्मर्स को वो डायरेक्ट पनिश कर सकते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी को पनिश क्यों नहीं कर सकते? इट्स देयर, Yes, काफी हुआ है. इट्स देयर, अगर आप देखें ना काफी डेटा में, मेनी टाइम इट्स हैपन. No, sir. Rarely it happens. Not many times. चलिए, मैं कभी नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं फिर आपको ना पनिशमेंट के केसेस आई विल ऐड इन द प्रेजेंटेशन. थैंक यू. But please add both farmers and municipalities. You must have both set of both like specimens. I will do it. Thank you, Dangi sir. I will add. फार्मर तो दांगी साहब लास्ट पायदान पे खड़ा है, इसलिए इसको ब्लेम कर देते हैं. बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको कुछ नहीं कहते. सर ये सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट म्युनिसिपैलिटी लेवल पर क्यों नहीं लगाए जा सकते सर? अमरपाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. प्रॉब्लम वही है इकोनॉमिक्स की, और प्रॉब्लम क्या है, बजट की है. 60 to 70% बजट अमरपाल जी जो है वो कलेक्शन में चला जाता है. जितना बजट मिलता है ना, 30% बचा, 30% में वर्कर की सैलरी भी देनी है, जो आपके कलेक्शन व्हीकल है उनका फ्यूल भी देना है, उनकी रिपेयर भी करानी है. उसके बाद फिर कोई मैनेजमेंट ऑप्शन देखना है. अब मैनेजमेंट, जब आपके पास 30% बचा, उस 30% में से आप क्या करेंगे? दांगी साहब का बात सही है कि भाई आग लगा दो, अपने आप जल जाएगा. बाद में नहीं सर, सर ये तो कोई समाधान नहीं हुआ सर. ये तो कोई समाधान नहीं. इश्यू नहीं. हरदीप सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. I was in Kyoto in 2018. Okay. वहाँ का मतलब जस्ट उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम देखने, मतलब जैसे देखने नहीं, वो मतलब जा रहे थे तो दिख गया रास्ते में. तो दे वर सेग्रीगेटिंग एवरीथिंग, लाइक उसके अंदर कुछ मेटल्स है, एल्युमिनियम है, लोहा है, प्लास्टिक है, एंड उसको दैट वाज आल्सो अ बिग सोर्स ऑफ इनकम फॉर द म्युनिसिपैलिटी. यस, यू आर राइट. एंड इंडिया में तो उनसे तो ज्यादा ही मेटल जो है हम कूड़े में डाल के फेंकते हैं डेली के, मतलब हफ्ते में 10-12, मतलब कुछ तो 2-4 चीजें तो हम लोग भी फेंक देते हैं अपना कूड़े में डाल के. तो अगर वो सेग्रीगेशन करे, इस ढंग से अलग अलग ढंग से चले, तो दे माइट गेट सम एक्स्ट्रा इनकम, एंड वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ से और अच्छे से होगा, वो सेग्रीगेट हो जाएगा जाते जाते वहां तक. कौन करेगा सर उसको? वो म्युनिसिपैलिटी करेगी. म्युनिसिपैलिटी में वही तो गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हैं कितने लोग. हाँ अमरपाल सर, आप बोल रहे थे. सर इंदौर में तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कई लगे हुए हैं सर. उन्होंने बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट सिस्टम कर रखा है इंदौर में. जो तो ये हर म्युनिसिपैलिटी लेवल पे मैंने आपको बताया, अभी डिस्कस कर रहे थे ना सर, हम अपने इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जितनी ईमानदारी से काम करते हैं. ऐसे आपको पता, हम ज्यादा नहीं कह सकते, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते चीजें. केरल का एग्जांपल था, मेघालय का एग्जांपल था, जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट कहलाती हैं, आप वो बेल्ट विजिट करके देखो. तो ये सर लोगों का एटीट्यूड है, सिस्टम है जो डेवलप है. मैं मानता हूँ नॉर्दर्न इंडिया जो हमारा है ना, करप्शन का गढ़ है, पावर सेंटर है. ये फर्क है साउथ इंडिया और हमारे नॉर्दर्न इंडिया में. नहीं, अमरपाल जी, यमुनानगर जगाधरी में शुरू हुआ था और 3-4 महीने अच्छा काम किया. जब आप यमुनानगर से उधर पोंटा साहिब की तरफ या सानपुर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आती है साइट वो. और अब आप वहाँ विजिट करिए. मैंने कोई 6 महीने पहले क्रॉस किया था, कोविड से पहले. सारे का सारा कूड़ा उन्होंने डंप कर रखा है, सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, वो काम नहीं कर रही. पॉइंट इज दैट दे इंस्टॉल द टेक्नोलॉजी, कलेक्शन भी हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा. अंबाला में भी शुरू हुआ है, पिछले 2-3 साल से बड़ी साइट लेके लैंड फिलिंग का काम है. होप सो इट विल कम आउट. सो एफर्ट्स आर गोइंग ऑन. लेट्स सी कि कितना सक्सेस है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है. दैट इज द इशू. अभी जो नए रूल आए हैं अमरपाल सर, म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2018 से लागू हुए, अब म्युनिसिपैलिटी को ड्यूटी असाइन की है डोर टू डोर कलेक्शन की. अभी पीछे में 3 बार मीटिंग में गया,
डिप्टी कमिश्नर के साथ सोनीपत हेडक्वार्टर पे मीटिंग थी, वहाँ डांट पड़ती है, बड़े बड़े लोगों को एक्सप्लेनेशन निकलती है और वहां से सुन के चुप करके बाहर निकल के आ जाते हैं। अब डोर टू डोर कलेक्शन का काम शुरू हो गया, उनको जीपीएस की बात चल रही है, बट फिर भी अभी पूरी तरह आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कह सकते। रोज इशू रहते हैं। मैं 3 मीटिंग में गया हूँ वहाँ सोनीपत। अब मैं सर आप बड़ौत का ही दिखा रहा हूँ, आज पेपर में आया, लगभग डंपिंग ग्राउंड नहीं है बड़ौत में, इतने बड़े तहसील हेडक्वार्टर पे भी, और सड़कों पर ही डाला जा रहा है 50 मीट्रिक टन कूड़ा, जो है 50 मीट्रिक टन कूड़ा पर डे जो सड़कों बट पर ही एक बात डाला जा कहूंगा, बट रहा है। सबसे लास्ट में नहीं है सर, अमरपाल सर, लास्ट में एक बात कहूंगा, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा सब लोगों के साथ। हम सारे कह देते हैं, वही बात आ जाती है गवर्नमेंट की, पॉलिसी मेकर की, म्यूनिसिपैलिटी वर्कर की। हम हमारे घर से गीला कचरा और सूखा कचरा कितना अलग करके देते हैं। गीले कचरे को अपने घर में खाद नहीं बनाते, हम पॉलिथीन में डालते हैं और बाहर फेंक देते हैं। मतलब ये सबके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। इस हवन में सबको आहुति डालनी पड़ेगी। हम म्यूनिसिपैलिटी वर्कर अकेले का नाम नहीं कह सकते। जी जी ठीक है। हाँ सर, ये बात आप सही कह रहे हैं। इंदौर में पब्लिक ने भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया है सर। इंदौर में पब्लिक लेवल पर नहीं, भी बहुत, अपने हरियाणा में भी हैं। इवन मेरे इधर फैकल्टी में ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल केयर नहीं करते। मेरी फैकल्टी में ऐसे लोग भी जो अपने घर में गमले रख के कचरे से खाद बना रहे हैं। तो सभी तरह के लोग हैं, करने वाले कर भी रहे हैं। इंदौर में पब्लिक, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक ने भी जो है इसमें काफी अवेयर करा है। तभी सक्सेस हुआ, वो तभी सक्सेस हुआ है। सर इंटरेस्ट लिया इसमें। सर ये सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। मेट्रो किसी ने गंदी नहीं की, क्योंकि बहुत हार्ड रूल थे। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर इम्प्लीमेंट हार्ड रूल्स करे तो हो सकता है कुछ चीजें सुधर जाएं। हाँ सही कहा दांगी सर। एक्चुअली में यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोई भी जो रूल बनता है, कानून, वो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती गवर्नमेंट। आप पॉलीथीन का देख लीजिए सर, इस समय बिल्कुल सर, पॉलीथीन का देख लीजिए, रूल बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा। पॉलीथीन मार्केट में कंटिन्यूस बिक रही है। हाँ जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? मुकेश मैम, आप प्रेजेंट हैं? हाँ जी सर। यस सर। कोई क्वेश्चन या फिर आप कर सकते हैं। मैं हरदीप सर नेक्स्ट सेशन की कह रहे थे, मेरे को लगता नहीं नेक्स्ट सेशन हम कर पाएंगे, 4 बज गए हैं। 4 बज दांगी गए। सर इंटरेस्टेड हैं आप तो हम बातें हैं, सर तैयार हैं, बोलिए। सर ऐसे है, बहुत सारे लोग आसी तो वेले हैं, चाहे 10 बजे तक बैठाए रखो, अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे आप किसी दिन और करा लीजिएगा सर, डॉक्टर साहब को बुलाकर एक बार और इनका प्रेजेंटेशन हो जाए, बढ़िया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो मुकेश मैम। ओके सर। हरदीप सर, थैंक यू इतनी नाइस और यूजफुल प्रेजेंटेशन के लिए। आपने बताया कि जैसे हम अब भी बात कर रहे थे, हमारे देश में ये नहीं हो रहा, हम ये नहीं कर सकते। जैसे आपने प्रेजेंटेशन में बताया सर, हड़प्पा साइट पहली साइट थी जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, और वो हमारी ही कंट्री की थी। तो हम फॉरेन की कंट्रियों ने हमसे सीखा है, अब हम ये कह रहे हैं कि फॉरेन बहुत साफ एंड क्लीन है। तो हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं सर, जो आप बता रहे हैं। हम हर एक को अपनी ड्यूटी निभानी होगी। जैसे सर भूपेंद्र सर कह रहे थे कि कितने घरों में 2 डस्टबिन है, नहीं है सर, एक्चुअल में नहीं है किसी के घर में भी। तो हमें अपनी वो ड्यूटी समझनी पड़ेगी जो हमें आपने बताई है कि हमें डस्टबिन 2 रखनी चाहिए, हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए। तो इतनी यूजफुल जानकारी के लिए थैंक यू हरदीप सर। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपने से इम्प्लीमेंट करिए प्लीज, आप करेंगे तो जरूर चेंज होगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू हरदीप सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू हरदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये कर सकते हैं मीटिंग को। जी डॉक्टर भूपेंद्र सर, कल के लिए कोई मैसेज डाल दें ग्रुप में। कल संडे ना, तो सर रेस्ट कर लें, सैटरडे आ गया, एक दिन तो रेस्ट करें। हाँ जी सर, बिल्कुल डाल देंगे। असाइनमेंट कल असाइनमेंट मिल जाएंगे सुबह आपको, जो असाइनमेंट करनी है आपको। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर।